अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज पाकिस्तान स्टडीज क्लास 9 की जो नई बुक आई है करिकुलम मतलब 2024 के लिए जो आई है। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप उस पे लेक्चर बना दें, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो मैं मार्क करवा दूंगी। जिस तरह बायो के मैंने सारे बनाए हैं क्लास 9 में, बिल्कुल उसी तरीके से। उसी तरह सीरीज में हमारे पास MCQs होंगे, एक वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले हम इस बुक का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या कितने कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, कंटेंट्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 के MCQs कर लेंगे। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में 3 चैप्टर्स हैं, फिर रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी 4 चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपके पास 9 चैप्टर्स आ जाते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है सेक्शन नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उनका पहला चैप्टर है हमारे पास आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसके हम MCQs की पेज की तरफ चलते हैं। ओके, आप लोग आज अपने बुक के पेज नंबर 17 पे यहाँ आप लोग MCQs मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 इज व्हाट डज द वर्ड आइडियोलॉजी मीन? इट मींस द साइंसेस ऑफ idea. फिर है आपके पास क्वेश्चन MCQ नंबर 2, which one of the following statement is consistent with the role of ideology? That is, ideology can lead to the accomplishment of the goals. फिर हमारे पास थर्ड है, what is the primary purpose of the Pakistan's ideology? It is to create a separate nation for the Muslims. The fourth one is, what was one significant consequence of economic inequality for the Muslims in the colonial India? That is the development of demands for the social and economic fairness and political representation. Then है, what contributed to the social and political marginalization of Muslims in the British India during the colonial period? इसका सी पर आपके पास आंसर आ जाएगा. The next is question number 6. What fundamental beliefs and expressions of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah served as the foundation of Pakistan ideology? That is also the C part, the principle of unity, democracy, minority rights, and social justice. Here, question number 7 है, what aspects of Iqbal's philosophy and beliefs have had a significant impact on Pakistan's founding ideals as discussed in the text? D part है, promoting the Islamic identity, unity, self-realization, and spiritual renewal. Here, 8th है, what is the primary goal of colonialism as described in the text? It was to control and profit from the resources of the colonialized regions. 9th है, what significant impact did the British colonialism have on social structure in the Indo-Pak subcontinent? That is limited access to the education and jobs. Last one आ जाता है 10th, what was one of the primary objectives of Sir Sayyid Ahmed Khan's educational initiatives as discussed in the text? The encouraging scientific and logical thinking. ठीक है, so this in this video lecture we are done with the MCQs chapter number 1. In the next lecture we will be doing the short question answers or chapter number 1 inshallah. Till the next lecture, Allah Hafiz.